Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, this will be the last lecture for the revision of calculus or a preview of relay analysis. So we were discussing Taylor expansion last time. So I start from that point. I hope you are able to see this word screen with Taylor expansion as the heading, and we describe Taylor's expansion as in case a function is differentiable up to order n. That means first derivative, second derivative, up to nth derivative exists at some point x is equal to a function value, derivative, first derivative value, second derivative value, and so on up to nth derivative value. They all exist. So it can be proved that for some neighborhood of a that has a width h, that means all points lying between a minus h and a plus h, or the interval this, you can write down the function in the form of this expansion, where every term contains x minus some power of x minus a. In the first term, its power is 0. In the first term, it's function value only, but in the term with x minus a having have power 1, we have derivative value at x equal to a, then x minus a whole square upon 2 factorials, derivative value of second derivative value at a, x minus a cube divided by 3 factorial, then third derivative at x equal to a, and so on up to the nth term. Now, this is a finite expansion, uh, but if a function is differentiable up to any order, the same expansion can go to infinity like this. Uh, it doesn't stop at the nth term, but goes on. Uh, at some stage, we will be proving such theorems or such statements, and that is part of our work during this course. Uh, but we have seen some application of these expansions in your earlier study in calculus. Now, if the derivatives, instead of defined at some x is equal to a, which is not 0, then we have to use this expansion. And if the derivatives are available at x is equal to 0, uh, then we have the expansion that is known as Maclaurin's expansion. And this is more frequently used whenever function is differentiable at x is equal to 0. And for most of the transcendental functions, which are differentiable at x is equal to 0 up to any order, this Maclaurin expansion is used to write down their infinite series expansion. So if the derivative of the function are available up to any order, then Maclaurin's expansion is an infinite series, and any function which can be expanded into this infinite series qualifies as a transcendental function. Uh, we can see that the algebraic function that we studied earlier in polynomials, finite polynomials, of course, are rational functions. But an infinite polynomial can go into the class of transcendental function. But infinite polynomials usually are not do not appear in elementary studies. It is only in the advanced studies where infinite polynomials appear, and the polynomials. This is also a polynomial because it involves powers of x up to any power. Some examples that I want to share with you before proceeding further. Uh, Writing down, typing
things in Word sometimes are very time consuming, and uh, uh, for me, sitting long hours on computers and typing sometimes has this issue of my eyesight. So I prefer sometimes to write it down, make a copy, take a pic, and that pic is included here. Examples of Taylor and Maclaurin's expansion and series. We have seen that e power x can be extended like this. We have been studying this formula for a long time, but this is developed on the basis of the fact that e power x and all its derivatives, they are also e power x, and their values exist at x is equal to 0, and each value is 1. So if I consider the Maclaurin series, infinite series formula that we have introduced in the previous page, uh, substituting the values of the function at 0, derivative value at 0, second derivative value 0, and so on and so forth, that are all having values 1, and we substitute this in this formula, we get e power x is equal to this proven. And this is a simple example of Maclaurin's expansion. Uh, Similarly, we have seen somewhere before that the sine function, which is also a transcendental function, has this infinite power series representation, and that is also obtained using Maclaurin's expansion, because derivative of sine are all defined at x is equal to 0. So function sine x itself is 0 at 0. Its derivative is cosine, and cos 0 is 1. Second derivative is minus sine, but sine 0 is 0, so it is 0. For third derivative is minus cos, and this time we get minus 1. So derivative values are 1 for the first derivative, minus 1 for the third derivative, then again 1 for the fifth derivative, and it will be minus 1 again for the seventh derivative, etc. So each odd order derivative has a value 1, but it keeps on changing sign. So first we substitute all these values in the Maclaurin's expansion formula, and then we just look at the pattern and write down the infinite series. First term is coming from the first derivative term. Second term is coming from the third derivative term, and third derivative value was minus 1. Then next term is coming from the seventh derivative term, which is again minus 1. If you want to write down the next term, which will be x power n upon 9 factorial, which will be positive. Next term, x power 11 upon 11 factorial, which will be negative, and so on. The generalized term, and we note that the powers of x are odd numbers, so odd numbers are represented by 2n minus 1, so x power 2n minus 1 divided by factorial of 2n minus 1. And since sign is changing, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा कि -1 फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1 से ये नेगेटिव हो जाएगा, लिहाजा इट हैड टू बी -1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 या n minus 1. Similarly, if you treat cosine instead of sine, you will see that this time when you consider cos x as the basic function, then its value is 1. So first term in that case will be 1, and second term which involves sine x, take derivative of cos and it will be minus sine. At 0 it will be 0. So this time even power terms arrive instead of odd power terms, and it starts with 1, then first even power, the next even power, the next even power. Change of sign is there because derivative of sine and cosine both change sign uh, after a gap. And the generalized term here, I have written -1 power h power -1 h power n plus 1 correctly. This was a mistake in the previous case. So please correct it if you want to, or at least remember that it is n minus 1. Uh,
मैंने जब शुरू में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इंट्रोड्यूस किए थे तो log x के बजाय log 1 plus x का expansion लिखा था. Let us see what can be done with log x. We know that log x is not defined at 0. So Maclaurin expansion cannot be written for log x directly. The function log x is perfectly defined at x equal to 1. Its derivative, its second derivative, its third derivative, they are defined at x equal to 1. So instead of working out expansion at x equal to 0, that means instead of working out Maclaurin's expansion, we use Taylor expansion, which require a function to have derivatives at some value a, which is not 0. So here we choose x is equal to or a is equal to 1 and take function value at 1, derivative value at 1, second derivative 1 upon x derivative minus 1 upon x square hoga, that is minus 1 at x equal to 1. Then when we write down third derivative, instead of writing down it's directly positive, we just mention that it is minus 1 into minus 2 divided by x cubed because it is the derivative of x power minus 2. So the third derivative is, there are two negative signs, minus 1 square, and there is 2 into 1 involved, so 2 factorial. X is 1, so the result is only 2 factorial. Similarly, the next term, when you take the derivative of x power minus 3 is multiplied, and we have minus 1 into minus 2 into minus 3 divided by x power 4. So fourth derivative will be minus 1 appearing 3 times as in the product. So minus 1 raised to power 3 will be negative. Rest is 3 into 2 into 1, 3 factorial divided by x is equal to 1 and minus 3 factorial. So we see that here we are having derivative values as 1, then minus 1, then 2 factorial, then minus 3 factorial. The next will be plus 4 factorial. The next will be minus 5 factorial, and so on and so forth. So Taylor expansion is written here for x is equal to 1. So a value 1 hai. This Taylor expansion involves powers of x minus 1 in place of x plus a, x minus a, because in this example a is taken to be 1. And then substitute all these results into this expansion, which is infinite expansion. And we see that f1 was 0, then f prime 1 was 1, second derivative was minus 1/3, and so we keep on substituting. And in the formula of Taylor expansion, in the denominators, we have got factorials involved. तो जिस टर्म में 2 फैक्टोरियल है उसको उसमें डेरिवेटिव वैल्यू -1 है. जिस टर्म में नीचे 3 फैक्टोरियल है उसमें डेरिवेटिव वैल्यू 2 फैक्टोरियल था. जिस टर्म में 4 फैक्टोरियल है इसमें डेरिवेटिव वैल्यू के अंदर माइनस के अलावा 3 फैक्टोरियल आया. जिसमें डिनोमिनेटर 5 फैक्टोरियल will have 4 factorial. So factorials will cancel out. This will be simply 2, this is simply 3, this is simply 4, this is simply 5, and so on. So the expansion of log becomes an infinite series of powers of x minus 1. And in the denominator, you have 1, 2, 3, 4, 5, so on. So in the generalized term, x minus 1 raised to power n upon n. As signs are alternately changing, again minus 1 raised to power n minus 1 भी लिख सकते हैं, n minus n plus 1 भी लिख सकते हैं. Just to recall कि हमने पहले जो expansion लिखा था वो इससे different था, क्योंकि वो expansion ln x का नहीं था, ln x plus 1 का था. So let us see how this can be converted. अगर मैं इस पूरे expansion में x minus 1 की जगह y रख दूं, that is x is replaced by y plus 1. So यहाँ पे y plus 1 आ जाएगा. Everywhere x minus 1 इस जगह y आ जाएगा. So this is same as previously written expansion of log 1 plus x. तो y लिखो या x लिखो या t लिखो या r लिखो या n लिखो या n लिखो या b लिखो. So the format is there, and you need to understand. सर फिर इसकी मैक्लॉरिन सीरीज भी डिफाइन हो जाएगी ना अगर हम 1 plus y करेंगे तो? If you start from the beginning with log 1 plus x, then Maclaurin expansion can be written directly. जो कुछ हमने अभी टेलर एक्सपेंशन डेवलप करने के लिए किया है, log अगर बेसिक फंक्शन f(x) equal to ln 1 plus x है, that is perfectly defined at x equal to 0.
and its derivatives. अब उसके derivatives में जो नीचे है 1 upon x, फिर 1 upon x की power 2, 1 upon x की power 3, and so on and so forth. इस तरह की चीजें आएंगी. So yes, you can write down Maclaurin's function of log 1 plus x, but not ln x. ठीक है सर, सही है. Another simple expansion. I hope you people are familiar with hyperbolic functions. Sine hyperbolic is e power x minus e power minus x upon 2. So its value at x is equal to 0 is 0. So this is defined at 0. Whereas the derivative of sine hyperbolic is cos hyperbolic, because if you take the derivative of this e power x minus e power minus x divided by 2, it will be e power x plus e power minus x divided by 2, which is defined as cos hyperbolic. So in case of the hyperbolic function, you start with sine hyperbolic. The derivative will alternately be cos hyperbolic, sine hyperbolic, cos hyperbolic without change of sign. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कोसाइन के डेरिवेटिव्स में चेंज ऑफ साइन आते हैं, लेकिन साइन और हाइपरबोलिक में और कॉस हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव्स में चेंज ऑफ साइन नहीं आते. लिहाजा फंक्शन वैल्यू 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, सेकंड डेरिवेटिव 0 है. जहाँ जहाँ डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक आ रहा है उसमें फंक्शन वैल्यू डेरिवेटिव वैल्यू 0 है. जहाँ जहाँ कॉस हाइपरबोलिक आ रहा है उसमें डेरिवेटिव वैल्यू 1 है. सो without mentioning formula, I have just substituted all these terms. This expansion is almost similar to the expansion of e power x. E power x 1 से शुरू हो रहा है और उसमें भी ऐसी पावर्स हैं, लेकिन उसमें सारी पावर्स हैं. जबकि यहाँ पे चूंकि टर्म्स मिस हो रही हैं, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लिहाजा इवन पावर टर्म्स नहीं आ रही, ऑड पावर टर्म्स आ रही. I hope in the same way you can write down the expansion of cos hyperbolic, and this is the simplest task when we talk about expansions. Now, these examples where we have exposed ourselves to infinite series. One of the significant part of the study of calculus and real analysis is the exploration of infinite sequences and infinite series from the perspective of whether the infinite series converges or not. We have seen that we have transcendental functions. Whether they are defined at every point or not, that is something else. Just to think about these infinite series, whether they converge or not. We know that sine x is defined for every x. And being defined for every x means whatever x you input into this formula, this infinite series is going to give you a finite number. Look at the sine table or your calculator, and you replace x by any real number, negative, positive, large, small, finite. And this infinite series should give you a finite number, the same that is given by calculator. Correct to some calculator give result up to 8 decimal places. Computers with high precision can give you results up to 16 decimal places or 32 decimal places. But these are all convergent infinite series. So convergence of infinite series is an issue. When an infinite series of any kind is not convergent and is associated to some function, that means that function is not defined at that point. This issue has to be studied in a bit detail in this course, and we will go to that a little later when we start our regular study. मैं जब ये term इस्तेमाल कर रहा हूँ regular study, we have almost have 3 or 4 meetings now, and you will be thinking अभी तक हमारी regular studies नहीं. Yes, this is part of regular studies. We have to build upon all these things, so we have to revise this as a revision of calculus, and this is a preview of what we are going to explore in this course. So convergence and of course divergence is one issue that we need to look at again. आपने sequences और series की convergence divergence किसी course में पढ़ी थी?
यस सर, यस सर, कौन से कोर्स में पढ़ी थी? कैलकुलस सर 2। कैल 2 कैलकुलस। कैल 2 में। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने मैथमेटिकल मेथड का कोर्स पढ़ा हो? नहीं सर। नो सर। हाँ, असल वो मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स ड्रॉप इसलिए किया गया था कि उसका जो कंटेंट था वो मोस्टली एडजस्ट कर दिए गए दूसरे कोर्सेज में, और कैल 1, कैल 2, कैल 3 में जो डिवीजन हुई टॉपिक्स की तो उसमें ये चीज़ें शामिल कर दी गई। Anyways, just to look at the definition of the convergence of a sequence. This is a very familiar, popular notation for an infinite sequence. Sn is nth term, and these terms go from 1 to infinity. So this is in fact a list of numbers S1, S2, S3, etc. as I've written it here. This sequence is convergent if limit n approaches infinity of Sn is some finite number. If this exists, existence of limit, existence of function value, existence of derivative. I've been using कि ये लफ्ज exist किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? Unique, finite and real. Sometimes हम infinite ले लेते हैं, but mostly uniqueness and real is a necessity in the study of real calculus and real analysis. But in complex analysis, of course, we drop the condition of something existing. It can be real or complex both. So unique and finiteness is required here. Alternately, this definition is put in this terminology of this epsilon. We say that a sequence is convergent if for every epsilon there exists a positive real number, small m, a natural number, such that Sn minus L is less than epsilon. इसका मतलब है terms of the sequence are close to the limit L, where we are claiming that the sequence is converging. For all terms which appear after the term Sm, ये इक्वालिटी कभी लगाई जाती है, कभी नहीं लगाई जाती, doesn't matter. What is the message? The message is a sequence converges to L if all terms of the sequence lie within a small interval L minus epsilon to L plus epsilon, which is a representation of this. Except for the first m terms, यानी S1, S2 से लेके Sm तो इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन बाकी सारी टर्म्स जो हैं starting Sm plus 1, Sm plus 2 up to S infinity, they are all within this small interval, and that is the basic idea of convergence of an infinite sequence. So when you have studied sequences, I hope you understand what I've just talked about convergence in terms of for every epsilon you can find a number, an integer, which represent के epsilon से बनने वाला जो interval है point of convergence के गिर्द L minus epsilon से epsilon L plus epsilon तक सारी टर्म्स इसके अंदर हैं सिवाय फर्स्ट फ्यू फाइनाइट के. एप्सिलॉन बड़ा होगा तो 2-3 टर्म्स बाहर होंगी, एप्सिलॉन छोटा होगा तो 20-25 टर्म बाहर होंगी, एप्सिलॉन और छोटा होगा तो 100-150 टर्म्स बाहर होंगी, एप्सिलॉन बहुत 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 छोटा होगा तो हो सकता है 1 लाख टर्म बाहर हो, बाकी सारी अंदर होंगी, 1 करोड़ टर्म बाहर हो, बाकी सारी अंदर होंगी. तो चाहे 1 करोड़ बाहर हो, चाहे 1 बिलियन टर्म्स बाहर हो, दैट इज अ फाइनाइट नंबर. The finite number of terms are outside, infinite number of terms are inside. That is the basic idea. Now, if we instead of a sequence, we look at a series, infinite series, which is the sum of infinite number of numbers. अगर हम उसकी convergence की बात करें और हम एक claim करें कि भाई ये infinite series converge कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? There are 2 important points that I have considered here for the convergence of infinite series. पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस infinite series के मदद से एक infinite sequence बनाऊं, कैसे बनाऊं? इस infinite sequence में S1 यानी पहली टर्म जो है
इस इन्फिनिट सीरीज की सिर्फ पहली टर्म हो, जबकि नई बनाई जाने वाली सीक्वेंस जो है उसकी दूसरी टर्म जो है S2, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस इन्फिनिट सीरीज। इसी तरह S3 जो है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, S4 जो है फर्स्ट फोर टर्म का सम, S5 जो है फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम, Sn जो है वो फर्स्ट n टर्म का सम। तो इस सीरीज से ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बन गई है। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करती है किसी नंबर L पे, इसका मतलब ये है कि हम इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की टर्म for n approaching infinity consider कर रहे हैं, तो that is this whole series. So if this sequence converges to number L, that means this series converges to L. And you may have studied many tests for finding out whether a given series is convergent or not. Did you? Yes, sir. Comparison, Yes, sir. comparison test, limit comparison sir. test, ratio Ratio test. test. So मैंने Yes, sir, यहाँ किया हुआ है, sir. किया है ना, तो मैं यहाँ सिर्फ रेशियो टेस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, because I will be using ratio test very frequently. मैंने पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, कोई भी इन्फिनिट सीरीज इस तरह की कन्वर्ज करेगी किसी नंबर L पे, तो रेशियो टेस्ट हमें ये कहता है कि इफ द लिमिट ऑफ मॉड नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, अगर इसकी लिमिट L आ रही है that is less than 1, then the sequence is convergent. अच्छा, थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हो गई यहाँ पे, हमने कहा है कन्वर्ज टू नंबर L, ये नंबर डिफरेंट है, ये इन्फिनिट सीरीज का फाइनाइट सम है जो एलिमेंट्री लेवल पर अक्सर बेशतर हम मालूम नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये मालूम करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, कन्वर्ज करेगी तो किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी, आमतौर पे एलिमेंट्री लेवल पर हम वो डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ भी ये जो नंबर मैंने रेशियो टेस्ट रिमाइंड कराने के लिए इस्तेमाल किया है L, ये नंबर जो है ये वो नंबर नहीं है जिसपे कि इन्फिनिट सीरीज कन्वर्ज कर रही है, यानी इन्फिनिट सीरीज का जो सम है वो ये वाला नंबर L नहीं है। हाँ, रेशियो टेस्ट ये कहता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो और करने के बाद अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी, और अगर ये इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल्स। आई थिंक इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी। तो टेस्ट कभी फेल हो जाता है तो फिर कोई दूसरा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ब्ला ब्ला। इस वक्त हमारा कंसर्न वो नहीं है, इस वक्त हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि whenever we have to explore the convergence of an infinite series, हम मोस्टली ये रेशियो टेस्ट इस्तेमाल किया करेंगे और कन्वर्जेंस की कंडीशन ये इस्तेमाल किया करेंगे। सो लेट अस सी कि अगर मैं इस कन्वर्जेंस कंडीशन को इस्तेमाल करता हूँ तो एक और चीज़ जो हमारे इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, और हो सकता है आपने किसी स्टेज पे पढ़ा हो, पावर सीरीज। Now, what is meant by power series? Power series is just a series of functions that involves the powers of x or powers of some function of x. I have considered on an example to demonstrate what is a power series and how do we find the interval of convergence of power series and the radius of convergence of power series. Have you heard these terms, interval of convergence and radius of convergence of a power series? No, sir. Yes, sir. Acha, chalo, this is a nice opportunity that I expose you to the idea of interval of convergence and radius of convergence, and this will do with the help of ratio test. ये मैंने example ले ली एक infinite power series की। ये generalized formula है और उसमें अगर हम I0 रखते हैं तो 1 आता है, I1 रखते हैं तो
x अपॉन 3 इंटू 2 आता है, i2 रखते हैं, पॉजिटिव हो जाता है, x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 3 आता है, x इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो x की पावर 3 हो जाती है, 3 की पावर 3 हो जाती है और ये नंबर 4 हो जाता है. So on and so forth. So I've considered an arbitrary example of a power series. इस पावर सीरीज में ये हैं टर्म्स. इन टर्म्स की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करूं तो इसमें से, इस फॉर्मूले में से सिर्फ -1 की पावर उड़ा दूंगा, बाकी सब वही रह जाएगा. So nth term in this power series is this. The next term in this power series will be x की एक पावर ज्यादा, 3 की एक पावर ज्यादा और नीचे i + 1 की जगह i + 1 + 1, जिसकी वजह से नेक्स्ट टर्म की फॉर्म ये बन जाएगी. रेशियो टेस्ट हमें कहता है कि हमें नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म की लिमिट निकालनी है. तो नेक्स्ट टर्म जो इस फॉर्म में है यहाँ रखी, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, तो इसको रेसिप्रोकल करके रख दिया. xi ऊपर था, हमने उसको नीचे रख दिया. 3 पावर i नीचे था, उसको ऊपर ले गए. i + 1 नीचे था, उसको ऊपर ले गए. सो दिस इज un + 1 अपॉन un. And we see that x power I cancels, न्यूमरेटर में x बचेगा. 3 पावर i cancels, डिनोमिनेटर में 3 बचेगा. उसके अलावा i + 1 और i + 2 बचेंगे. So this is what is left after simplifying un + 1 upon un. And we quickly see that limit is taken at I as I approaches infinity. So इस एक्सप्रेशन में जिसमें I इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर I कॉमन निकाल लें तो we have 1 + 1 upon I divided by 1 + 2 upon I. और फिर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये दोनों टर्म 0 हो गई. 1/1 है, x/3 है. ये सब कुछ मॉड में है, mod x/3. Now this power series converges if this limit that we have evaluated is less than 1. This is the condition of ratio test. तो हमने क्या किया कि un + 1 upon un को सिंप्लीफाई किया एज मच एज पॉसिबल और फिर i अप्रोचेज इन्फिनिटी लगा के हमने देखा कि इसकी लिमिट क्या आई. एंड वी सी दैट इट्स लिमिट इज अ फंक्शन ऑफ x डिपेंडेंट है. ये हमें एक नंबर नहीं मिला, हमें एक फंक्शन मिला. ठीक है, जो भी फंक्शन मिला हमने उसको l कहा और रिकॉल किया कि रेशियो टेस्ट कहता है कि कन्वर्जेंस जब होगी जब l < 1 हो. इसका मतलब है mod x/3 < 1 हो. mod x/3 < 1 होने का क्या मतलब हो गया कि mod x is less than 3. mod x less than 3 एक इंटरवल देता है -3 से 3 तक. सॉरी, तमाम रियल नंबर्स जो -3 से 3 तक हैं दे हैव अ मॉडुलस वैल्यू ऑफ लेस देन 3. तो ये जो इंटरवल इस तरह से हासिल हुआ, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. इसका मतलब है ये सीरीज जो लिखी हुई है पावर सीरीज, अगर मैं x की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान कोई लूंगा तो ये फाइनाइट रिजल्ट देगी मुझे, यानी कन्वर्जेंट होगी. और इससे बाहर का अगर कोई x वैल्यू इस्तेमाल करता हूं तो वहां पे ये कन्वर्ज नहीं करेगी. सो वी हैव डिटरमाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. आई रिपीट, हाउ डिड वी फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस? हमने गिवन पावर सीरीज से un + 1 upon un बनाया, सिंप्लीफाई किया एज मच एज पॉसिबल. लिमिट लेनी है i पे, i के फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर लिमिट लगाई और जो बाकी बचा दैट इज द लिमिट ऑफ un + 1 upon un and that comes out to be as a function of x. Temporarily we call it L, and for convergence of this power series L has to be less than 1, so that means this number should be less than 1. This number should be less than 1 means what? It means that mod x should be less than 3. आप कहेंगे यार मैंने 3 पे से mod क्यों हटा दिया? 3 पे से mod हटा के मैंने उसको पॉजिटिव रखा है, हालांकि जब mod हटाते हैं किसी नंबर से तो प्लस माइनस दोनों आता है. लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि mod x/3 इसमें से मैं
यूं भी लिख सकता था mod x is less than mod 3. mod 3 चाहे 3 प्लस हो या माइनस हो, mod 3 is 3. So mod x is actually less than 3, which gives me an interval. Uh, Recall that this inequality can be written as x minus 0 less than 3. Mod x minus 0 less than 3, that will give you 0 minus 3 to 0 plus 3, or simply minus 3 to 3. So this interval is the interval for which this limit is less than 1. So this is interval is called interval of convergence. Now what is the radius of this interval? The radius of the interval is the half length of the interval. So we say that the radius of this radius of convergence for this series, this infinite series, is 3. What is the center of convergence? 0. Okay. अगर देखें तो सही x is equal to 0 पे ओरिजिनल सीक्वेंस जो है सीरीज जो है उसकी क्या शक्ल बनेगी? If in this series I replace x by 0 everywhere, what is left? 1. One. x is equal to 0 पे ये कन्वर्जेंट है और x equal to 0 के अलावा -3 और 3 के दरमियान हर नंबर पे ये कन्वर्जेंट है. तो 0, the middle point of this interval of convergence, is the center of convergence, and the radius is the width of the half width of the interval, that is 3. So this is the way we explore radius of convergence, interval of convergence, center of convergence. अच्छा जी, जरा देखें तो सही है, हमारा दोस्त पुराना e पावर x है, इस पर ये प्रोसेस पूरा लगा के देखें क्या होता है. un is x power n upon n factorial, un plus 1 is x power n plus 1 upon this, un plus 1 upon un is this, and I hope you can easily work this out, and un plus 1 upon un comes out to be x upon n plus 1. Now this un plus 1 upon un is a function of both x and n plus 1, but when I apply limit n approaches infinity and n appear only in the denominator, so this limit has to be 0 because denominator goes to 0. So the limit of un plus 1 upon un comes out to be 0, which is less than 1, definitely convergent. For what values of x? अरे भाई ये लिमिट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई. जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई तो this is convergent for every real number. And we know that e power x is defined for every real number. We studied the domain. We mentioned the domain of this exponential function is the whole set of real numbers. So हर real number, हर finite real number को जब तुम e की पावर में रखोगे तो एक finite real number आएगा. इसका मतलब ये हो गया कि ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है for all x belonging to set of real number. Set of real number is the interval of convergence, and the radius of convergence should be infinity. And again, the center of convergence is 0. You know, set of real numbers is considered to be set of minus infinity to infinity. From there, we write down the radius of convergence to be infinity, and the symmetric point right in between x equal to 0 is the center of convergence. Again, look here, x को 0 रख दें, so you will get 1. That means a finite value. So this infinite series converges for x equal to 0, and x equal to 0 is the center of this convergence. इसी तरह log पे नजर डालें. We found this expansion a few minutes earlier using Taylor expansion. और अगर हम इसको वर्कआउट करें, लेट मी गो बैक कि जहाँ हमने टेलर एक्सपेंशन निकाला था लॉग का, हियर ये एक्सपेंशन वहां लिखा हुआ है. सो इसकी जनरल टर्म क्या है? दिस इज द जनरल टर्म. मॉड में ले जाके -1 की पावर उड़ा दी हमने, so x minus 1 is power n upon n. Next term is x minus 1 is power n plus 1 upon
n plus 1. The ratio of these mods, and we simplify this and find out that mod un plus 1 upon un की फॉर्म क्या बनी. एक तो इसमें x माइनस 1 बचा और एक इसमें n अपॉन n प्लस 1 बचा. n upon n plus 1 को इस तरह लिखा जा सकता है after taking n common from numerator and denominator. So when a limit n approaches infinity is applied, this number becomes 0. So this whole is 1. So the limit comes out to be mod x minus 1. This limit, when whatever it is, if it is less than 1, the series is convergent. So we put the condition less than 1 and x minus 1 less than 1. This defines the interval of convergence. तो भाई x minus 1 less than 1 को हम inequality की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ये सेंटर है 1, ये रेडियस है. -1 is less than 1, the center plus radius 1. So interval comes out to be 0 to 2. So the interval of convergence, it can be written as this, or it can be simplified to this inequality 0 to 2. Not 0, not 2. So the radius of the convergence we pick from here, and the center of convergence we pick from here. So center of convergence is 1, radius of convergence is 1, the interval of convergence is 0 to 2. So we can study the power series, whether it is obtained from a Taylor expansion, or it is obtained from Maclaurin's expansion, or it is obtained as from a Lorentz expansion, which appears in complex analysis. अगर हमें उनका interval of convergence or radius of convergence or center of convergence चाहिए, so this is a process which is based on ratio test. So that's it as for the first part of the review of calculus, and let me go for a brief discussion on the second part. It's about a few things in integral calculus. Initially I was thinking कि मैं एंटी डेरिवेटिव से काम शुरू करूँगा, लेकिन आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपका कैल 1, कैल 2, कैल 3, you have been exposed to many of the ideas already, और आपने रीमन सम भी पढ़ा होगा, इन्फिनिट रीमन सम भी पढ़ा होगा, मगर मुझे उसके ऊपर बिल्डअप करना है, इसलिए मैं फोकस करूँगा उस पर इस brief review of integral calculus. Now for any function, when I write down this thing f maps r into r, it means a real valued function of a real variable. So input is real as well as output is real. जब हम इन functions के derivatives की बात कर रहे थे, तो हमारा concern जो था वो एक point पे था कि उस point पर what's the slope of the tangent, जिसको हम instantaneous rate of change भी कहते हैं, at a single point. So when we were discussing before that, all that we discussed was differential calculus, or derivative या differential of a function is a point phenomena. एक point पे क्या हो रहा है, उस point पे
So tangent exists करता है कि नहीं करता? You take the ratio limit of the ratio delta y upon delta x. So both sides say that comes out to be same or not at a particular point. Before that, you studied continuity, and continuity was also a point phenomena. एक point पे function continuous है या नहीं? Limit originally was a point phenomena, but now we are moving forward and we want to see a cumulative effect of the behavior of any function. And when we consider cumulative effect of a function, it opens the gate to solutions of a wide variety of practical problems. I'm not going to those practical problems right now, but you must have studied how you use integrals to find out areas of surface of revolution, volume of a solid of revolution. ये दो तीन बातें अभी मैंने कही है, इस तरह की बातें सुनी है? Surface of revolution, solid of revolution, इनके volumes और इनके surface areas. तो Yes, sir. बहुत से practical तुम issues देख चुके हो और wherever सर सर जी कहिए. नहीं कुछ नहीं सुन रहे हो. Okay, so at the grassroots level, the simplest form of this cumulative effect is written as definite integral a to b of the function. And we consider this as area under or between the graph of the function and the lines y is equal to 0, that is x-axis, and the vertical lines x is equal to a and x is equal to b as shown in this figure. We call it definite integral of a function from x equal to a to b. To find it out, we again need a limiting process. Yes, if you know the antiderivative of fx, you integrate it and use fundamental theorem of integral calculus के इसका integral निकाल के fb minus fa करके आप value निकाल लेते हैं definite integral की. But that fundamental theorem of integral calculus वो कहाँ से आती है? वो भी एक limiting process से आती है और वो limiting process जो है वो हम यहाँ discuss कर रहे हैं. आपने एक्सटेंसिवली स्टडी किया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव जिसके जरिए फंडामेंटल डेरिवेटिव फॉर्मूले बनाए. आई डोंट नो आपने अगर रीमान सम और इन्फिनिट रीमान सम पढ़ा है तो उसके जरिए कॉमनली नोन फंक्शंस जो हैं लाइक x पावर 4 या x पावर n या sin x या cos x इसके इंटीग्रल्स एज रीमान सम निकाले कि नहीं निकाले? निकाले हैं? Yes, sir. sin x का इंटीग्रल यूजिंग रीमान सम? नो सर नहीं निकाला. पहले क्यों कहा था निकाले? एक्स स्क्वायर का सर निकाला साथ ने कहा था, उसको सब आता है और उसको लगता है उसको सब आता है. किसको? साथ को? कौन सा साथ है यस भाई? सर. ये बहकाया जा रहा है मेरे खिलाफ. अच्छा चलो कोई बात नहीं. मैं इनकी बात को गलत मान के तुम्हें एक कॉमन स्टूडेंट ही समझूंगा. ठीक है, घबराओ नहीं. नो प्रेशर, नो टेंशन. So limiting process जो है that is build up over the concept of Riemann sum, and to start with we just remind you that if function is increasing over some interval like this, what we do is that the interval of integration is subdivided into some parts. मैंने for example 8 parts कर दिया. So sub intervals जो हैं उनमें सूरत कुछ ऐसी होगी कि पहला जो है x वो a जो है वो x नॉट कहलाएगा, नेक्स्ट x1 फिर x2 x3 x2 x8 जो कि b होगा. और हम टू स्टार्ट विद इक्विडिस्टेंस इंटरवल्स ले रहे हैं, सब इंटरवल्स. सो डेल्टा x इज b अपॉन a, b माइनस a अपॉन 8.
द सब इंटरवल्स सारे के सारे हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं और ये नोट करते हैं कि एफ एक्स नॉट जो है ये पहले सब इंटरवल जो कि एक्स नॉट से एक्स वन है यानी ए से एक्स वन तक एफ एक्स नॉट स्मॉलेस्ट वैल्यू है पहले इंटरवल की, जबकि एफ एक्स वन दूसरे इंटरवल की फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, एफ एक्स टू तीसरे इंटरवल की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जबकि एफ एक्स सेवन जो है ये आखिरी इंटरवल की फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। चुनाचे मैं जब लिखता हूं एफ एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स तो वो इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया है। जब मैं लिखता हूँ एफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया है और ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है ये बिलो द कर्व है representing the function which is an increasing function. So when I write down these terms and add them together, that give me the total area of all these vertical strips which are all under the curve, and I call it left Riemann sum in which summation goes from 0 to 7, that is the 8 terms. इसी तरह right side से अगर मैं consider करूँ हर interval के right side पे तो fx1 is the largest value of the function in the interval. fx2 is the largest value of the function in the second interval. तो इससे जो strips बनेगी यानी the strip that whose area is fx1 into delta x पहली strip ये कर्व से ऊपर बनेगी। तो राइट रीमन सम जो है उसकी सूरत हाल 8 इंटरवल्स के लिए ये होगी। Now if the interval originated interval AB is divided into n sub intervals 8 के बजाय तो and we take each of which delta x is going to be minus a upon n तो left Riemann sum जो है उसमें index of summation goes from 0 to last but 1। इसका इंडेक्स ए का एक्स नॉट और आखिरी लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है वो x7 था यानी 8 से पहले का। सो लेफ्ट रीमन सम में इंडेक्स ऑफ समेशन गोज फ्रॉम 0 to n-1, राइट रीमन सम में इंडेक्स गोज फ्रॉम 1 to n। Now here I don't impose the condition that when I write down left Riemann sum or right Riemann sum, I don't impose the condition that the function be increasing or decreasing or blah blah. लेकिन अगर increasing है तो left Riemann sum के जो left Riemann sum जो बन रहा है that is being formed by those vertical strips or rectangles that were below the curve. So their area will be less than the area under the curve. Whereas now I consider right Riemann sum. So for increasing function, right Riemann sum is being built up using vertical strips or rectangles which are above the curve representing the functions. So the left Riemann sum का area जो है वो right Riemann sum के area से कम होगा if the function is increasing, and the situation will be reversed if I consider a decreasing function. For this function, left Riemann sum बड़ा होगा क्योंकि इससे upper rectangles बन रहे हैं और right Riemann sum छोटा होगा उससे lower rectangles बनेंगे। So if function is assumed to be decreasing, then left Riemann sum is greater than the right Riemann sum. Now I can change the scheme और मैं Riemann sum लिखते हुए फंक्शन की वैल्यू किसी x पे लेता हूं जिसको मैंने x स्टार कह दिया है, वही इक्वल इंटरवल लेता हूं। ये कहलाएगा जनरल सम अगर फंक्शन वैल्यू किसी इंटरवल के इन बिटवीन किसी पॉइंट पे ली गई। I hope you have studied Riemann sum at midpoint, means Riemann sum at left hand point, Riemann sum at right hand point. This is general Riemann sum
and it can be in this Riemann sum, the function value that you choose as the height of the rectangle that may be evaluated at any point in between the endpoints of an interval. So that makes a general sum. In general, for an increasing function, left Riemann sum is smaller than the general sum, which is smaller than the upper right Riemann sum. In case of a decreasing function, the left Riemann sum is the largest and the right Riemann sum is the smallest. General Riemann sum is in between. एकदम से बहुत आगे बढ़ गया. Now, if I consider only increasing function, ये जो हमने left Riemann sum लिया है, is it left? No, there is something wrong. Oh, it's not left. नहीं, index left का 0 से शुरू होना 0. चाहिए. ये राइट है. हाँ, लेकिन ऊपर का इंडेक्स n-1 है ना. n-1 है. हाँ, तो ये गड़बड़ है. तो it should be I is equal to 0 to n-1, but then increasing function के लिए ये upper integral बनेगा. लिहाजा it has to be 1 to n for increasing function, because this Riemann sum will be then smallest. अगर हम इस पे लिमिट ये n-1 नहीं बल्कि n है, हाँ, ठीक. If n approaches infinity, then this right Riemann sum will become what we call lower integral. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, and we denote it like this. और ये सही लिखा हुआ है, ये नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है. लार्जेस्ट वाज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये राइट Riemann sum है. Right Riemann sum is smallest, so that is lower integral. I'll make corrections and then अभी तक तो मैंने ये फाइल पोस्ट ही नहीं की है. इंक्रीजिंग फंक्शन है ना. हाँ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन. तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट Riemann sums जो होंगे वो लोअर रेक्टेंगल्स होंगे. लोअर रेक्टेंगल से लोअर इंटीग्रल बनेगा, और राइट Riemann sum लेंगे तो अपर इंटीग्रल सही बनेगा. लिखा है. जी? नीचे वाला सही लिखा है. नीचे वाला सही लिखा है. 0 to n होगा ना. दूसरा वाला N होगा ना. सर ऊपर वाला भी n-1 होगा ना. नहीं. We're taking the left one. एक हम लोग मिनट. लास्ट वाला वो बार तो कंसीडर नहीं करते. देखो राइट Riemann sum जो है ना, हर इंटरवल का राइट इंडेक्स लेते हैं. तो पहले इंटरवल का राइट इंडेक्स 1 है और आखिरी इंटरवल का राइट इंडेक्स n है. तो ये राइट Riemann sum है, और राइट Riemann sum जो है वो अपर इंटीग्रल बनाएगा. तो लोअर इंटीग्रल जो है वो बनेगा लिमिट ऑफ लेफ्ट Riemann sum से. तो ये I is equal to 0 होना चाहिए बस. दिस इज द करेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड. मैं कर दूंगा इसमें, ठीक है. अच्छा साहब, अगर ये अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दोनों बराबर हो तो फिर हम कहते हैं कि इंटीग्रल द फंक्शन इज इंटीग्रेबल in the sense of Riemann. If these limits if these upper and lower integrals are not same, then the function is not integrable. Now, these fundamental ideas are required to respond to provide a response for fundamental questions. इससे पहले जब हमने लिमिटिंग प्रोसेस के तौर पे डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया, तो हमें एक टूल मिला जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो अब जो है टूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट लीड अस टू determine whether a given function is integrable or not over a given interval. और अभी इस डिस्कशन में मैंने फंक्शन पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं. इंक्रीजिंग कहा है, डिक्रीजिंग कहा है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस भी था.
मैंने अभी ये मौजूद छेड़ा ही नहीं कि फंक्शन के इंटीग्रेबल होने या ना होने के इशू में फंक्शन की अपनी कंटिन्यूटी दरकार है कि नहीं। याद रहे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है, बगैर कंटिन्यूटी के फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी नेसेसरीली देयर, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबिलिटी नॉट नेसेसरीली देयर। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। तो हमने जो टूल डेवलप करने की कोशिश की यहाँ पे, उससे हमें इसी तरह की फंडामेंटल क्वेश्चंस के रिप्लाईज मिलेंगे। अच्छा था, note that if a function f is integrable in the sense of Riemann, सिर्फ लेफ्ट रीमन सम और राइट रीमन सम की लिमिट ही बराबर नहीं होगी, बल्कि जनरल रीमन सम या मिड पॉइंट रीमन सम सब बराबर होंगे। For any arbitrary function, neither increasing nor decreasing over the entire interval AB, then we describe Riemann integrability as follows. बात को थोड़ा सा समझने के लिए, देखने के लिए, फिजिकली लोअर रेक्टेंगल है, अपर रेक्टेंगल है, लोअर रेक्टेंगल से एरिया बनेगा जो कि एक्चुअल एरिया से कम होगा, अपर रेक्टेंगल से अपर एरिया बनेगा जो एक्चुअल एरिया से ज्यादा होगा। बीच में हमने कई सवाल छोड़ दिए हैं और मैं अभी भी ऐसी बस जुबानी थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ कि जो लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया है, आप रेक्टेंगल्स बढ़ाते चले जाइए, लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह अपर रेक्टेंगल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ाते चले जाइए, वो एक्चुअल कर्व से ऊपर ही हैं, उनका कुछ हिस्सा ऊपर है, इसकी वजह से अपर रेक्टेंगल्स का जो टोटल एरिया होगा वो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व से ऊपर ही रहेगा, कम होता चला जाएगा लेकिन ऊपर ही रहेगा। लोअर एरिया बढ़ता चला जाएगा लेकिन कम रहेगा, अपर एरिया कम होता चला जाएगा लेकिन एक्चुअल एरिया से ज्यादा रहेगा। So ये issues अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। When we go full fledged in this study, we will go into the details. अब मैंने छेड़ दिया मौजूद क्या कि फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है, ब्ला ब्ला, आर्बिट्री फंक्शन है। तो मैं फिर रीमान इंटीग्रेबिलिटी को कैसे एक्सप्लोर करता हूँ? तो सबसे पहले तो मैंने फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, फंक्शन जो इन्वॉल्व है डिस्कशन में ये बाउंडेड है over the interval AB, and I hope you remember the term boundedness. फंक्शन की कोई वैल्यू जो है वो इन्फिनिट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बाउंडेडनेस को हम इस तरह से भी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहीं लिखा था, स्मॉल एम और कैपिटल एम इस्तेमाल की थी, मैं फिर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि इस इंटरवल पर, पूरे इंटरवल पर फंक्शन की एक लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट होंगी, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय फंक्शन बाउंडेड है। अच्छा जनाब, इसके बाद क्या करते हैं हम, इंटरवल का एक पार्टीशन बनाते हैं ना। पार्टीशन से क्या मतलब है, हमारे पास टू स्टार्ट में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसके बीच में हम फंक्शन का बिहेवियर क्यूमुलेटिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं। पार्टीशन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो इंटरवल का था उसको मैंने x0 कहा, फिर x1, x2, x3 अप टू xn। xn को असल में b है, ये सेट ऑफ पॉइंट b आ गया। Now this partitioning of the given interval is not unique. It may vary. यानी मैं कई किस्म के पार्टीशन बना सकता हूँ एक ही इंटरवल के, कई स्कीम इस्तेमाल कर सकता हूँ पार्टीशन बनाने के लिए। लेकिन जब पार्टीशन बन गया तो उसके बाद क्या किया, पार्टीशन जो बना तो ith जो सब इंटरवल बनेगा इन पॉइंट से xi + 1 - xi, यानी टू कंसेक्यूटिव x वैल्यूज जो हैं इस पार्टीशन की, इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट नीड नॉट बी फिक्स्ड। यानी डेल्टा x पहले तो मैंने फिक्स किया हुआ था ना, b - a / n फिक्स कर दिया डेल्टा x, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये सब इंटरवल्स जो है वो इक्वल साइज के हों। उसके बाद हम कहते हैं जो पहला इंटरवल है जो x0 से x1 तक है,
इसमें फंक्शन की सारी वैल्यूज जो हैं एक फाइनाइट नंबर से ज्यादा होंगी और एक फाइनाइट नंबर से कम होंगी। अगला इंटरवल x1 से x2, फंक्शन की सारी वैल्यूज एक फाइनाइट नंबर स्मॉल m 1 से बड़ी होंगी और कैपिटल M 1 से छोटी होंगी। इसी तरह हमने बाउंड्स डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एवरी सब इंटरवल। लास्ट सब इंटरवल दैट स्टार्ट्स एट xn -1 to xn which is b, इसमें m(n-1) जो है वो फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू या फंक्शन की कोई वैल्यू इससे छोटी नहीं है और इससे बड़ी नहीं है। You may have heard the terms upper bound and lower bounds, least upper bound and greatest lower bound. Have you? Yes. Yes, sir. That's good. तो हर इंटरवल पे फंक्शन का ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है। स्मॉल m is used for greatest lower bound, capital M is used for least upper bound. हम इन बाउंड्स पर एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे अपने नॉर्मल लेक्चर्स। अब अगर मैं किसी भी इंटरवल पे फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू को इंटरवल विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा तो मैं इसके लिए नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको मैं रीड करता हूँ एज लोअर सम ऑफ द फंक्शन f ऑन द पार्टीशन p। और अगर अपर बाउंड इस्तेमाल करूं यानी अपर बाउंड इनटू विड्थ ऑफ द इंटरवल और ऐसे तमाम कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर लूं तो दैट इज अपर सम ऑफ द फंक्शन फॉर द पार्टीशन। लुक एट दिस फिगर। इस इंटरवल में ये पॉइंट जो है फंक्शन का लोएस्ट पॉइंट है फंक्शन ग्राफ पे और ये पॉइंट है हाईएस्ट। तो एक रेक्टेंगल जो है वो यहां से बनेगा और एक रेक्टेंगल यहां से बनेगा। तो कैपिटल M वाला जो है वो अपर रेक्टेंगल होगा और स्मॉल m वाला जो है लोअर रेक्टेंगल। अगर पार्टीशन चेंज कर दूं तो ये सारी स्कीम चेंज हो जाएगी, लेकिन still I will have a lower sum of the function for the particular partition. I will have an upper sum of the function for the given partition. अगर मैं अब इन अपर सम्स और लोअर सम्स पे लिमिट लगाऊं, किस किस्म की लिमिट? पहले तो सिर्फ n अप्रोचेस इन्फिनिटी कर रहा था, साथ साथ अब क्या कह रहा हूं? Not only n approaches infinity but every possible partition of AB, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और यूनिक है तो मैं इसको अपर इंटीग्रल कहता हूं। इसी तरह अरे यार sometime my cursor control is not very good. So इसी तरह अगर मैं upper sums for the function f for every possible partition पर लिमिट लगाऊं n approach infinity, so it seems to be a lot of work. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और हर पार्टीशन के लिए ये लिमिट सेम है तो हम इसको अपर इंटीग्रल कहते हैं। And the function is said to be Riemann integrable only if these two are equal. Now quickly through one or two examples. Look at this example. मैंने अभी जो लास्ट पेज डिस्कस किया इसका अहम बात ये थी कि हमने फंक्शन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई सिवाय इसके कि वो बाउंडेड हो। किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेबल होने के लिए बाउंडेडनेस जरूरी है। What did I say? For any function to be integrable, it is necessary that the function is bounded over the interval. But it is not sufficient. I hope तुम लोग इस तरह की terms जो हैं उनसे अब familiar हो गए काफी। This is necessary for that, but this is not sufficient for that. A is necessary for B,
but A is not sufficient for P. So boundedness is necessary for a function to be integrable, but boundedness is not sufficient for a function to be integrable. ये जो बात मैं कह रहा हूँ मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल से दो डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसी बात को डिस्क्राइब कर रही हैं. Now this is a function which is bounded. It has values 1 for all x from 0 to 1, 0 included, 1 not included. And the function values are all 2 when x is 1 to 2. Interval over which I am considering the integral is 0 to 2, 0 से 2. अच्छा तुम देख लो इस फिगर में ऑलरेडी ये बॉक्स जो है 1/1 है, इसका एरिया 1 है. ये बॉक्स 1/2 है, इसका एरिया 2 है. तो इन दोनों का एरिया मिला के 3 बनता है. So I don't need rocket science to tell what's the area under this graph of this function above y-axis between vertical lines x is equal to 0 and x is equal to 2. But I'm making it difficult as there is a famous saying due to one of my very old friend, 50 साल पहले का दोस्त, वो कहता था why keep it simple when you can make it complicated. No, it's not simply complication. It is going into the minuteness of the issue. Besides, जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया है हम उसको इम्प्लाई कर रहे हैं. 0 से 2 हमारा इंटरवल है, उसका हमने पार्टीशन बनाया. 0 से लेके एप्सिलॉन. व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज स्मॉल नंबर जो यहाँ कहीं होगा. फिर 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 1 से थोड़ा सा पहले. फिर 1 प्लस एप्सिलॉन, सिर्फ थोड़ा सा 1 के बाद. फिर 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 से जरा पहले, और फिर 2. पहला इंटरवल बना 0 से एप्सिलॉन, दूसरा बना एप्सिलॉन से 1 माइनस एप्सिलॉन, तीसरा बना 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हर इंटरवल में फंक्शन की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू लिखी. तो भाई 0 से एप्सिलॉन तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, लिहाजा स्मॉलेस्ट भी 1 है, लार्जेस्ट भी 1 है. इंटरवल की विड्थ कितनी है? दिस माइनस दिस. अगला इंटरवल जो एप्सिलॉन से 1 माइनस एप्सिलॉन तक है, इसमें भी फंक्शन की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू सेम है, और इस इंटरवल की विड्थ 1 माइनस एप्सिलॉन व्हिच इज 1 माइनस 2 एप्सिलॉन. तीसरा इंटरवल जो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन तक है, इसमें फंक्शन की स्मॉलर वैल्यू 1 है और लार्जर वैल्यू 2 है, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन पे 1 है, 1 प्लस एप्सिलॉन पे 2 है. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया. अब बाकी अगले दो इंटरवल में फिर डिफरेंस नहीं है. अब मैं रीमान सम लिखने जा रहा हूँ. लोअर रीमान सम में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच सब इंटरवल कंसीडर करूंगा और विड्थ ऑफ द इंटरवल मल्टीप्लाई करूंगा. जब ये सब कुछ कर लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, lower sum comes out to be 3 minus epsilon. So lower Riemann sum is dependent on epsilon, and epsilon हमारे उस कबीले का बाशिंदा है जिनके कद बहुत छोटे होते हैं. So epsilon is a small number and we apply limit on epsilon approaches 0. So 3 minus epsilon की limit जो है वो 3i, which is obtained from lower sum, so it is lower integral. अपर रीमन सम, तो इस टेबल से जो हर इंटरवल में फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू है उसको विड्थ ऑफ द इंटरवल से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आता है 3 प्लस एप्सिलॉन. सो अपर रीमन सम की लिमिट एज एप्सिलॉन अप्रोचेस 0, ये भी 3 आती है, और हमने देखा था ज्योमेट्रिकली भी 3 था. तो अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल आर सेम, सो द फंक्शन इज इंटीग्रेबल. पता नहीं, मुझे ख्याल आ रहा है कि किसी अच्छे टीचर ने आपको इस तरह की एग्जाम्पल भी डिस्कस किए होंगे आपसे. हैव यू सीन सच एग्जाम्पल्स बिफोर? याद तो नहीं है. याद नहीं है? चलो, समझ में आया है? जी सर समझ में आया, Yes, लेकिन आपने जो पार्टीशन की है वो जरूरी है. आपने जैसे 6 उसमें पार्टीशन किया है. अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल किया है.
देखिए मैं इससे पहले कह चुका हूं कि पार्टीशनिंग कैन बी डन इन एनी वे। मैंने पार्टीशनिंग जो की है उसमें क्या वेरिएशंस कर सकते हैं आप बताइए। फंक्शन कांस्टेंट है बिटवीन 0 एंड 1। देयर इज अ वेरिएशन एज यू क्रॉस 1, देयर इज अ जंप इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जहां जंप आ रही है उसको तो मुझे अलग करना ही है। 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके दरमियान जंप आ रही है। तो मेरे लिए दो पार्टीशन काफी होते हैं, एक 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, एक 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, और एक 1 प्लस एप्सिलॉन से 2। इतना पार्टीशन भी सफिशिएंट होता है और उससे भी यही रिजल्ट आते हैं। तो यू कीप ऑन चेंजिंग पार्टीशन, यू विल गेट सेम रिजल्ट। ये स्कीम पार्टीशन की जो मैंने अभी आपसे बताई कि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन तक जा सकता था, लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन ताकि मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड को अलग कर सकूं, और फिर 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 तक। these three intervals were sufficient. So partition 0 एप्सिलॉन की जरूरत नहीं थी और 2 माइनस एप्सिलॉन की जरूरत नहीं, उस सही है पार्टीशन सर, ठीक है। ये रिजल्ट आता। तो पार्टीशनिंग जो है वो तो और एक बात बताओ, एट सर्टेन स्टेज दिस काइंड ऑफ पार्टीशनिंग और डेवलपमेंट ऑफ ग्रिड, अभी तो हम 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट फंक्शंस होंगे तो डोमेन के अंदर हमें ग्रिड बनानी पड़ेगी जो जाल होगा एक्स वाई प्लेन पे। So this kind of partitioning becomes an art instead of science. An art because I make the grids or partitions by exploring the nature of the function. क्योंकि ultimately, याद है ना, mathematicians are lazy because they are smart. Ultimately हमारा टारगेट ये होगा, हो सकता है किसी स्टेज पर किसी स्टडी में, not necessarily in this course, कि हम पार्टीशन इतनी एफिशिएंट बनाएं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम टाइम ले, मिनिमम number of calculations required हो. So having different partitions is a real issue and very important. But look at this problem, which is not partition sensitive. This function has value 1 again for every x between 0 and 1, but what x? Which are rational. The same function has value 2 on the same interval 0 to 1, but for what x values that are irrational. अब 0 से 1 के दरमियान कितने रैशनल्स और कितने इरेशनल्स होंगे भाई? फॉर दैट मैटर किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? आई वांट अ रिस्पांस। सर इनफाइनाइट। और कितने इरेशनल नंबर होते हैं? Infinite. So if I make the graph of this function, there will be one dotted line at the level y is equal to 1 and one dotted line at the level of y is equal to 2, isn't it? Because अगर x 0 से 1 के दरमियान है लेकिन रैशनल है तो y वैल्यू 1 होगी। अगर x 1 और 0 और 1 के दरमियान है लेकिन इरेशनल है तो y की वैल्यू 2 होगी। Do you get the nature of this function? Do you get why I have considered dotted line and not a continuous line? No sir, can you please explain again? 0 से 1 के 0 से हमने सफर शुरू किया, पहला कदम उठाया बहुत छोटा, जहां पे कदम रखा वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? दुनिया का कोई माई का लाल बता सकता है? Rational. अच्छा, Could be either. इट कुड बी आइदर। सो जब भी मैं 0 से 1 की तरफ ट्रेवल करूंगा तो फॉर सम x आई विल हैव y इज इक्वल टू 1 एंड फॉर सम x आई विल हैव y इज इक्वल टू 2, और जो लेवल y इज इक्वल टू 1 है इस पे भी
ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच में इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज से जंप करके यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, और इन्फिनिट नंबर्स ऑफ जंप्स होंगी, जंप्स जिनको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि y is either 1 or 2 depending on whether x is rational or irrational. So that is why the perforation, that is why the gaps between the points. I hope and pray you have some idea of real numbers as a field, completeness of the set of field of real numbers, and order completeness. और अगर आपको नहीं है तो we are going to start from that point when we start exploring real analysis. That is why I have considered in the last part of today's discussion this example, because I have to understand rationals and irrationals in detail. मैं आमतौर पे इस तरह की कुछ डिटेल्स कैलवन में शुरू कर देता हूँ, बट इट इज नेवर टू लेट. अच्छा जनाब, आप जरा गौर तो करें, इक्वल अगर मैं विड्थ पार्टीशनिंग क्या है मैं कुछ बता ही नहीं रहा, इक्वल स्पेसिंग ले रहा हूँ, हर इंटरवल की विड्थ b माइनस ए अपॉन एन यानी 1/n. इसका मतलब है जब भी मैं इस फंक्शन के लिए लेफ्ट रीमन सम या लोअर रीमन सम लिखूंगा, तो लोअर रीमन सम का मतलब है फंक्शन वैल्यू स्मॉलेस्ट 1 इन द होल इंटरवल 0 to 1 या इसके किसी भी सब इंटरवल में स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन की 1 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू फंक्शन की 2 होगी. तो लोअर सम जो बनेगा 1 into the width of the interval. Summation is going from I is equal to 1 to n. This whole thing does not involve I. जब I इन्वॉल्व नहीं हो रही तो 1/n को बाहर निकाल दिया. समेशन I is equal to 1 to n क्या होता है? अगर तुम्हें समेशन के फॉर्मूले याद हो तो दिस इज 1. समेशन ऑफ 1 इज n. 1/n into n, n कैंसिल हो गया, 1 आ गया. I hope if you don't remember summation formulas, अपने अभी अगर स्मार्टफोन हाथ में है तो गूगल करो समेशन फॉर्मूलाज, तो तुम्हारे पास फौरन आ जाएंगे फॉर्मूले. समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब, ब्ला ब्ला, ये फॉर्मूलों की लिस्ट आ जाएगी. ओके, गो फॉर अपर सम. हर सब इंटरवल पे, पूरे इंटरवल पे भी और हर सब इंटरवल पे जो फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू होगी 2 होगी. तो कैपिटल एम, स्मॉल एम की जगह 1 आया था, कैपिटल एम की जगह 2 आएगा. जब 1 आया था 1/n समेशन से बाहर आ गया था, अब 2/n समेशन से बाहर आ जाएगा. और समेशन I is equal to 1 to n of 1, ये मैं 1 लिखना भूल गया हूँ, ये फिर n आएगा. तो 2/n into n कैंसिल आउट और 2 आ गया. Lower Riemann sum, upper Riemann sum in the limit come out to be different. Lower is 1, upper is 2. So lower integral is 1, upper integral is 2. They are not equal. This function is not a Riemann integrable. Was this function bounded? And none of the function value is infinity or minus infinity. The largest function value is 2, the smallest function value is 1. So this function is bounded. And as I said, boundedness sufficient नहीं है integrability के लिए. लिहाजा अगर मैं हर इंटरवल पे फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू से रीमन सम बनाऊंगा और उसकी लिमिट लूंगा, पार्टीशन कोई भी हो, रिजल्ट 1 आएगा. अपर बाउंड से रीमन सम बनाऊंगा, पार्टीशन कोई भी हो, अपर सम लिमिट में 2 आएगा. इसका मतलब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो है दे आर नॉट सेम. सो द फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल. जी, अब मुझको बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई सर. Summation 1 is equal to n. ये is the key in this whole discussion. Partition was no issue because the function was behaving in the same way throughout 0 to 1.
if you choose x to be rational, the value of y is 1. If you choose x to be irrational, the value of y is 2. So in every subinterval, the lower bound is 1, upper bound is 2. So lower areas and upper areas लिखना बड़ा simple है, और हम देखते हैं कि function produces a lower integral which is different from the upper integral. So function is not integrable in the sense of Riemann, or is not Riemann integrable. So boundedness is if a function is integrable, it must be bounded. But if a function is bounded, it may be integrable, it may not be integrable. So that's it for today. And inshallah, hopefully next week, and we will conduct our classes on regular times. But if for any reason I miss a regular class, I will conduct a similar class at some time, record it and share it with you. Okay? Yes, sir. Any queries are welcome on Okay, sir. WhatsApp, on Facebook, anywhere. Sir? जी कहिए. Sir, in the next class, will we start from our book, the reference book, which you told us? जी जी जी, मैं उस किताब के वो तमाम सफ़ात जो मैं डिस्कस किया करूँगा वो आपसे शेयर कर लिया करूँगा, उसकी पिक लेके आपको शेयर कर दूंगा. मुझे उसकी पीडीएफ नहीं मिल रही, लाइब्रेरी में सुना है वो किताब आईबीए की. सर है लाइब्रेरी में. हाँ, तो आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. मैं जो जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा उन टॉपिक्स के पेजेस जो हैं उनकी पिक लेके शेयर करता रहूँगा. और Okay, sir. आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट. और बगौल अहमद रजा तो कभी कोई किताब मेरा ख्याल इस्तेमाल ही नहीं करता, वो तो अपनी कहानी सुनाता रहता है. तो मैं भी कर सकता हूँ ये कहानी सुनाऊँ, लेकिन मेरी अपनी जो स्टाइल है उसमें ये कि यार एक किताब ऐसी होनी चाहिए जिसकी एक्सेस तुम लोगों तक हो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किताब जो है, जो मेरी अब पसंदीदा तरीन किताब है रीएनालिसिस के लिए, ये पीडीएफ नहीं मिल रही. पता नहीं कोई पीडीएफ बनाने वाला मिल सकता है या नहीं मिल सकता कि हाँ, ये जो मेरे पास एडिशन है ये इंडियन एडिशन है, ये अच्छा नहीं है. लेकिन लाइब्रेरी में जो एडिशन है वो इंटरनेशनल एडिशन है, वो अच्छा है. तो वो जो इंटरनेशनल एडिशन है, अगर उसकी कहीं से किसी तरह से पीडीएफ बनवा लो तो बड़ी बात है. लेकिन उसने बड़ा कॉपीराइट का बहुत मसला किया हुआ है, किसी भी वेबसाइट से वो अवेलेबल नहीं मिल रही. एनीवेज, that will Sir, not be an what's the name issue. of book? It is the understanding of the subject that you get during these discussion that is more important. Okay? अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ और सेशन एंड कर रहा हूँ. अल्लाह